Good afternoon, everyone. थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में I'll give a brief presentation. So सोनार कैसे यूज कर सकते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए. So what exactly is a sonar? So first, go to the next slide. So sonar एक device है which actually will send the sound waves. जैसे आप, if you are mounting this is the device that I'm talking about. So if you mount this on the boat, it will send the sound waves, and when it hits the bottom, the sound waves will reflect back. So हमको speed पता है, speed of sound in water हमको already पता है. So and from the time, like we can calculate the time it takes. जैसे हम sound waves release किया, so we can compute the time it takes to go to the bottom and reflect back. So speed multiplied by time, that will give us the distance from the surface to the bottom. So that is how the sonar measures the depth of the water column. और इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है. इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट. सो इसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है. सो व्हेन यू अप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस दिस मटेरियल, इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट. दिस होल डिवाइस, दिस पार्ट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. दैट इज हाउ इट विल जनरेट द साउंड वेव्स इन द वाटर. तो इसको नॉर्मली जो वोल्टेज दैट वी अप्लाई इज अराउंड 5 वोल्ट. इट्स अ लो वोल्टेज डिवाइस. So it will start vibrating and then send the sound waves. तो जो reflect करने के बाद, when the sound waves reflect, then again it will detect the the reflected waves. तो फिर इसका voltage भी हम reading करेंगे. So first thing is हम voltage input दे देंगे, and then we will read the voltage output also after the reflection. So that is how we will compute the time and the distance. So the next slide. Not required. Yeah. So iska, how do you collect the data using the device in the actual water body? There can be two ways. So one, you can mount it on the boat, जैसे इसमें दिखा है. So you can mount it on the bottom of the boat, which will be connected to a computer. Boat के ऊपर कोई computer होना चाहिए जिसे वो connect कर सकते हैं. And then you can take the readings. और दूसरा तरीका है, if you don't have a boat, you can also use a drone to hang it. So you can use any rope to hang the sonar. और वो surface जो है ये पानी के अंदर जाना चाहिए. So then you can take the readings as well. So either of these things will work. That is how it is commonly taken. The measurements are commonly taken. Next slide. So the previous slide is about how to collect the data. फिर ये है mission planning. So if you are mounting this on a boat, see how should the boat move in the lake. Let's say आपका एक 10 meter by 10 meter lake है. So हमको पहले मिशन प्लानिंग करना पड़ेगा. दैट विल टेल यू बेसिकली हाउ द बोट मूव्स अक्रॉस द होल एरिया ऑफ द पॉन्ड. जैसे दिस येलो लाइन दैट यू सी हियर, सो दैट इज द पाथ दैट द बोट विल मूव. सो ये जो लाइंस दिख रहा है, दिस इज द पाथ दैट द बोट विल मूव, एंड देन विल कलेक्ट द रीडिंग्स. So it will collect the depth data at every location. So we will have the latitude, longitude, the depth and the time at that particular measurement. तो ये डिवाइस के साथ जीपीएस भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन नो द लोकेशन ऑफ द डेप्थ. मतलब वी नो द डेप्थ, बट एक्स वाई लोकेशन भी पता होना चाहिए, द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. सो इसके सॉफ्टवेयर भी है कई सारे फॉर मिशन प्लानिंग. और देयर इज एन ऑडो पायलट विच इज ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द डेटा दैट यू गेट. तो 3 तरह के डेटा होता है. एक तो क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल देता है हम, like this is the cross sectional data. So the depth will keep on increasing, फिर it will go back to 0. ये contour map होता है. So this color again will indicate the depth, and this जो line दिख रहा है, so these contours indicate the regions of the same depth. इसको contour map बोलते हैं. And this is the raw data. So raw data आप देखेंगे तो you have the date and time, then the latitude and longitude, and the last column is the depth. So this is the raw data that you get. तो ये डेटा मिलने के बाद हम वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं आसान से. यू कैन सिंपली, आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. यू नो द एक्स वाई जेड पूरा लोकेशन पता है आपको, डेप्थ भी पता है आपको. सिंपल इंटीग्रेशन करके हम वी कैन कंप्यूट द वॉल्यूम.
तो ये छोटा सा कोड हमने लिखा है टू हाउ टू कंप्यूट द वॉल्यूम. नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए. सो ये सोनार का दूसरा एप्लीकेशंस है. इसका रिवर बेड मैपिंग, रिजर्वायर का सेडिमेंट कितना थिकनेस है वो भी मेजर कर सकते हैं इससे. और अंडर वाटर अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वी कैन ऑल्सो गो एंड मॉनिटर द कंस्ट्रक्शन यूजिंग दीज सेंसर्स. कि अगर अंडर वाटर का कोई डैमेज है, स्ट्रक्चर का, डैम गेट का कोई डैमेज है, दैट कैन दिस डिवाइस कैन ऑल्सो डिटेक्ट द अंडर वाटर डैमेजेस, स्ट्रक्चरल डैमेजेस. लास्ट. सो normally this device is being currently imported. इंडिया में कोई नहीं बना रहा है. So we are developing our own indigenous device in our lab. तो हमारा एक प्रोटोटाइप बन गया है. We are validating it in the field. So hopefully in the next 2-3 months we will launch it in the market. तो इसका थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हम दिया है, but I don't think it is relevant. Yeah, so that's all from my side. Thank you. So after this we will do the field test. We'll go to the field. So we will show you how you can take the measurement using this device.